तो ऑल रेडी। जय माता दी। दिन पर सभी को नमस्कार दोस्तों, हम विटनेस कर रहे हैं आज उस ऐतिहासिक मोमेंट को। हर हर हिंदुस्तानी इस पल का इंतजार कर रहा है। लाइव वीडियो में आप देख पा रहे हैं इतने सारे लोग इसको विटनेस करने के लिए, इसको सिर्फ देखने भर के लिए कितनी भीड़ आपको दिखाई दे रही है। ये सारे लोग सिर्फ इस चंद्रयान की सिर्फ चंद्र पे जो यात्रा शुरू होने वाली है उसको देखने के लिए, उसकी झलक पाने के लिए इतने सारे लोग आए हैं। आज आप, मैं, सभी हम लोग इस ऐतिहासिक पल का वेट कर रहे हैं और बस ये सफर बस अब शुरू होने वाला है। 5 मिनट और बचे हैं इसके और बस हम लोग पहुंच जाएंगे वहां पर चंद्रयान के साथ, चांद की इस यात्रा पर। पूरा भारत एक साथ, हम सब। हाँ जी, जब तक ये मिशन स्टार्ट होता है कुछ बातें करते हैं चंद्रयान से रिलेटेड। चंद्रयान, हाँ जी, आवाज आ रही है? जय श्री राम, जय श्री राम। सुनिए सब बहुत ध्यान से। तो ये चंद्रयान बिल्कुल जाने के लिए तैयार हमारे सामने, और जैसा कि आप देख रहे हो चंद्रयान आपके सामने, हाँ, दिखाई दे रहा है, राइट। 2013 में मैं बेंगलोर आया था। इतनी तेज धूप है आज, मौसम बहुत लगातार गर्म है और इस लगातार गर्म मौसम में भी सब लोग यहाँ पर बिल्कुल जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। किस तरीके से लोग अम्ब्रेला लेके लोग इसके वीडियोस भी बना रहे हैं और बहुत सारे लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा उत्तेजित हैं और होंगे, जैसा कि आप इस समय बिल्कुल स्क्रीन से जुड़े हुए हैं। यस, बिल्कुल चंद्रयान जो है ये हम सबके लिए ऐतिहासिक मोमेंट है और इसीलिए हमने सोचा कि आपके साथ इसको साझा करना चाहिए। देखिए कितने सारे लोगों का उत्साह लगातार हमें बनता हुआ नजर आ रहा है। आप बिल्कुल इस समय लाइव हैं इसरो से। यस, इसरो के साथ जैसे ही चंद्रयान यहाँ से अपनी यात्रा शुरू करेगा हम सब उसको देख पाएंगे। देखो, ये है उत्साह इंडिया का। सबसे भारी रॉकेट आज लॉन्च होने जा रहा है जिसका वजन जो है 640 टन है। इससे पहले चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 जा चुका है, चंद्रयान 3 भी जा चुका है। आज जो है हमारी चंद्रयान 3 जो जा रहा है, क्यों जा रहा है चंद्रयान की ये यात्रा जो है ये हो रही है, क्यों हो रही है, कुछ पता है आपको? चंद्रयान की जो यात्रा हो रही है इसके 3 प्रॉपर ऑब्जेक्टिव्स हैं जिसको लेके चंद्रयान चल रहा है। सिर्फ 4 मिनट्स बाकी, 3 मिनट्स एंड 57 सेकेंड्स टू गो। तो चंद्रयान 3 जो है बस कुछ मिनटों में हमारे साथ अब यात्रा शुरू करेगा। हाँ जी, 5 मिनट और हैं बस। जय हिंद के नारे लगने चाहिए इस समय। हाँ, सिर्फ 3 मिनट्स बाकी, 5 मिनट से 3 मिनट्स अभी। पूरा इसरो टीम इस समय कंप्यूटर पर निगाहें जमा के बैठा है। आज पूरा भारत देश लगभग इस पर अपनी नजरें लगाए बैठा है कि सब कुछ, सबको यहाँ पर एक एक पल दिखाई देना चाहिए। इस मोमेंट को कोई भी मिस नहीं करना चाहता, इसलिए आपके साथ इसको जोड़ रखा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा चंद्रयान आज जाने वाला है, इसका जो मेन उद्देश्य है वो ये है कि ये चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और नरम लैंडिंग को दिखाना चाहता है। लैंडिंग के लिए, मतलब सेफ लैंडिंग के लिए और सॉफ्ट लैंडिंग कैसे होगी इसको दिखाने के लिए सबसे मेन हमारा काम जो हो रहा है, सबसे मेन उद्देश्य हमारा ये है। उसके अलावा रोवर को चंद्रमा पर घूमते हुए प्रदर्शित करना, ये भी दिखाना है। चंद्रयान का जो मिशन है भारत के लिए बहुत जरूरी है। लगभग 700 करोड़ रुपए की लागत इस बार लगी है, क्योंकि इस बार जो हमारा चंद्रयान है वो उस जगह जाएगा जिसके बारे में कोई जानकारी नहीं है और बहुत सारे मिशन और लेके जा रहा है हमारा चंद्रयान। उसमें मिशन में एक और
जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि ये मिशन चंद्रमा की सतह पर पानी और मिट्टी की खोज करने जा रहा है। इसके अलावा पानी और मिट्टी की खोज करने के अलावा चंद्रयान पर बहुमूल्य धातुएं होने की भी संभावना है, जिसमें यूरेनियम, प्लेटिनम ये सब शामिल है। और इन सब को ढूंढने के लिए अगर हम साफ शब्दों में कहें तो एक भारत का एक मिशन है चांद पर अपनी एक मजबूती के साथ उतरना, चांद पर जो बहुमूल्य चीजें हैं उनको ढूंढना और भारत का झंडा वहां पर लहरा के आना। इसके लिए चंद्रयान बिल्कुल तैयार है। बस कुछ मिनट्स और हैं और चंद्रयान बस उड़ने ही वाला है हमारे साथ। 1 मिनट, 2 मिनट में भी अब 3 सेकंड्स कम हो गए हैं। जब तक आपको ये बात सुनाई देगी तब तक ये 8 सेकंड्स लगभग कम हो जाएंगे। जैसा कि हम देख पा रहे हैं सबकी नजरें स्क्रीन पे टिकी हुई है। वहां के जो लोग हैं इनका कितनी धूप में उत्साह देखो, जैसे कि आप और मैं स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, पर वहां पे जो लोग हैं वो बिल्कुल, हाँ वो बिल्कुल इस पर नजरें गड़ाए बैठे हैं कि बिल्कुल भी मिस नहीं करेंगे। तो लाइव इसीलिए आपको दिखाया जा रहा है। बस लास्ट 1 मिनट टू गो। बहुत धड़कने, बहुत ही हैपनिंग मोमेंट है ये हम लोगों के लिए, हिस्टोरिकल मोमेंट। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हम इस मोमेंट को साथ जी रहे हैं, आप और मैं एक साथ जी रहे हैं। लास्ट 1 मिनट टू गो, 44 सेकेंड्स, 42, 41 सेकेंड्स टू गो। बहुत कम समय बचा है गाइस, बिल्कुल दिल थाम के बैठ जाइए एकदम। लास्ट 30 सेकेंड्स है अब। हाँ जी बिल्कुल लास्ट 30 सेकेंड्स बचे हैं, अब तो और कम हो गए 20 सेकेंड्स। सिर्फ 20 सेकेंड में ये चंद्रयान यहाँ से अपनी यात्रा शुरू कर चुका होगा। और इस 20 सेकेंड जो हमारे लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, देखो लास्ट 9 सेकेंड सिखा रहे हैं, पूरी नजरें चंद्रयान पर। और ये शुरू हुआ सफर चंद्रयान का। चंद्रयान अपनी पूरी गति के साथ आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ये हम सबके लिए बहुत ऐतिहासिक पल है। देखिए इस चंद्रयान की स्पीड को। सच में अब भारत बहुत ऊपर इस समय दिखाई दे रहा है। वेरी हैपनिंग, बहुत ही प्राउड मोमेंट सभी भारतीयों के लिए। बहुत ऊपर जा चुका है चंद्रयान। और मैं आपको यहाँ पे बता दूं, चंद्रयान मिशन इस बार लैंडर और रोवर लेकर जा रहा है। चंद्रयान 2 की तरह ऑर्बिटर लेकर नहीं जा रहा है। जो लैंडर और रोवर ये लेके जा रहा है, लैंडर जिसका नाम विक्रम है और रोवर जिसका नाम प्रज्ञान है, उसको ये चंद्रयान पूरी शक्ति के साथ जाता हुआ लेके जा रहा है। इसमें कोई ऑर्बिटर नहीं लगाया गया है क्योंकि इसरो चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर के जरिए संपर्क करने की भी पूरी कोशिश करने वाले हैं। सभी साइंटिस्ट इस समय पूरी निगाह एकदम गड़ा के बैठे हैं और इनकी नजरें बिल्कुल वहां हैं। मन में बहुत आशंकाएं भी होंगी, खुशी भी होंगी, पर चेहरे पे अभी सबके बहुत कम एक्सप्रेशन नजर आ रहे हैं क्योंकि सबकी अभी सांस ऊपर ऊपर नीचे नीचे हो रही है। ये लाइव दिखाता हुआ 13.610 लैटिट्यूड पे पहुंच गया है। 13.591 दिखाई दे रहा है सामने स्क्रीन पर। ये सफर अब पूर्णतया शुरू हो चुका है और चंद्रयान ऊपर आसमान में उड़ चुका है यहां से। अमेरिका, चाइना, रशिया और उसके बाद अब इंडिया। अगर आज ही हमारा मोमेंट सफल होता है तो हम इस नंबर पे रहेंगे। भारत माता की जय बिल्कुल बनता है इस पे, और हम सब
रियली वी आर वेरी प्राउड कि हम इसका हिस्सा बन रहे हैं और हमने इसको एक एक मिनट लाइव देखा है। चंद्रयान, यस यस यस। तो इसकी ये चंद्रयान है, इसमें क्या होता है, ये चंद्रयान मिशन है। इस बार एक मिशन के साथ निकला है कि जो भारत से हमारा चंद्रयान जा रहा है, क्योंकि हमने 2019 में जो चंद्रयान गया था लास्ट, चंद्रयान 2, उसमें ऑर्बिटर लेके गया था और वो सक्सेसफुल नहीं हुआ था। तो चंद्रयान इस बार लैंडर और रोवर लेकर जा रहा है, और लैंडर और रोवर लेके इसलिए जा रहा है क्योंकि उस ऑर्बिटर से संपर्क भी साधने की यहाँ पर मिशन में एक शामिल है कि ये भी इनका काम है कि इस बार वो भी करने वाले हैं। और इसके साथ ही चंद्रमा की धरती पर जो बहुत सारे बहुमूल्य धातुएं हैं उनको भी ढूंढना इस बार काम है। वहाँ की मिट्टी, उसको भी ढूंढना, पता करना है इस बार कि चंद्रयान पे या चांद पे जो जो चीज़ें हैं वो सब भारत अपने इस मिशन में शामिल है कि ढूंढ के लाएगा क्या क्या है वहाँ पे। सारी उपलब्धियां हासिल करने की ज़रूरत, वहाँ का पानी, वहाँ की सतह, वहाँ की मिट्टी की खोज करना, ये इस बार चंद्रमा पे हमारा जो चंद्रयान है वो इस मिशन के साथ वहाँ गया है। और हाँ, सबसे मेन बात हमारे मिशन में ये है कि हमारा चंद्रयान का लैंडर इस बार उस जगह जाने वाला है जिसके बारे में अभी तक पूरे वर्ल्ड को कोई जानकारी नहीं है। इसीलिए भारत ने, हमारे इसरो ने 700 करोड़ रुपए की लागत लगा के चंद्रयान 3 का निर्माण किया और ये अब उड़ चुका है, धरती की सतह से ऊपर जा चुका है। और इसका जो मिशन है वो चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और नर्म लैंडिंग करने का प्रयास है, प्रदर्शन करने को दिखाना है। तो उस पर ये काम कर रहा है। हम देख पा रहे हैं लगातार कि फ्लाइट पैरामीटर्स को ये फॉलो कर रहा है। 290 सेकेंड्स पूरे हो चुके हैं इसको यहाँ से गए हुए, और 290 सेकेंड्स में ये ऊपर जा चुका है और हमें ये दिखाई दे रहा है। देखिए 12,391 लैटिट्यूड तक ये पहुंच गया है, ऊपर दिखाई दे रहा है पूरा। हाँ, 406.9 की रेंज से आगे बढ़ रहा है ये लगातार। प्राउड मोमेंट हम सबके लिए, एक बार जोर से बोलो जय माता दी। भारत माता की जय बोलने का मोमेंट है ये, एग्जैक्टली। हाँ, सो गाइज, कैसा लग रहा है इस मोमेंट को लाइव देखने का, इस हमारे आज ऐतिहासिक दिन के इतिहास का इस हिस्सा बनने का कैसा लग रहा है, बताइए। लगातार लोग बिल्कुल एक एक चीज देख रहे हैं और हम भी एक एक चीज देख रहे हैं, क्योंकि हमारे लिए भी उतना ही इम्पॉर्टेंट मोमेंट है। कोई भी नहीं चाहता इस समय स्क्रीन से हटना। रेंज लगातार बढ़ रही है, 754 किलोमीटर पर आवर अभी स्पीड चल रही है। 200 अल्टीट्यूड पहुंच चुका है ये। 375 सेकेंड्स हो गए हैं चंद्रयान को यहाँ से उड़े हुए। साइंटिस्ट को हम देख पा रहे हैं, एक जिम्मेदारी का एहसास उनके चेहरे पे नज़र आ रहा है, एक कॉन्फिडेंस भी दिखाई दे रहा है। अब वो पर्याप्त मात्रा में बातें करते हुए दिखाई दे रहा है। इट मीन्स कि सब कुछ अभी ठीक चल रहा है। यस, सभी लोग लगातार स्क्रीन पर नजर गड़ाए हुए हैं और मेरा बिल्कुल मन नहीं हो रहा है इस स्क्रीन को छोड़ने का, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हिस्टोरिकल मोमेंट है हमारे लिए, पूरी टीम के लिए, पूरे इंडिया के लिए, एक्चुअली हमारी पूरी हर एक देशवासी के लिए बहुत मोमेंट इम्पॉर्टेंट है ये। ये ग्राफ ये हमें बता रहा है ग्राउंड ट्रेसेस इसके। ये देखिए चंद्रयान मिशन के बारे में कुछ यहाँ पर बातें हैं। रोवर पायलट्स यहाँ पर यूज हुए हैं, लैंडर पायलट्स और रोवर पायलट्स के बारे में यहाँ पे पूरा बताया गया है। रामभा, चेस्ट और इंस्ट्रूमेंट फॉर ल्यूनर सेल्स मीन्स एकेडमी, है ना। सारी चीज़ें जो इसमें यूज हुए उसका इन्होंने पूरा डिस्क्रिप्शन हमें दिखाया है ताकि हमें हर चीज़ पता हो। और ये
हाँ जी, नहीं नहीं नहीं, बहुत जल्दी ये पहुंच जाएगा और इसमें लगातार हमें बने रहना है और लगातार हमें इसरो इसकी इन्फॉर्मेशन भी देता रहेगा। हर माध्यम से हमें इसकी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, तो हम सबको, हमारा ये मिशन है क्योंकि ये हमारा काम है, ये भारत का काम है, तो हमें बिल्कुल इस पर नजरें जमाए रखनी है। बिल्कुल देखते रहेंगे हम इसको लगातार। अब ये बहुत ऊपर पहुंच चुका है। 216 अल्टीट्यूड है इसका। 496 मिनट्स हो गए हैं। 490, 500 मिनट्स कंप्लीट, 500 सेकेंड, सॉरी 500 सेकेंड्स कंप्लीट हो गए। हैप्पीनेस अब लोगों के चेहरे पर, वहां पे बैठे लोगों के चेहरे पर जो उस समय एक डर था, वो अब साफ है और खुश हैं सारे साइंटिस्ट। सब बहुत सही चल रहा है अभी। चलिए, हाँ, यहाँ पर मैं आपको गाइज बता दूं एक बात, क्योंकि ये मिशन जो है हमारा, ये अब तक का LVM-3 जो है सबसे भारी रॉकेट है, जिसका वजन 640 टन है। और अगर भारत इस मिशन में सफल होता है तो अमेरिका, चाइना, रूस के बाद चंद्रमा पे सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला 4th कंट्री बन जाएगा पूरे वर्ल्ड में। अमेरिका, चाइना, रशिया के बाद 4th। और हम चाहेंगे डेफिनेटली ऐसा हो, तो लगातार हम बने रहेंगे इस पर और आपको लगातार इंफॉर्मेशन भी देते रहेंगे। लाइव हम जुड़े हुए हैं इस समय। अगर आपने मिस कर दी तो आप इस वीडियो के पीछे भी जाके एकदम एक बार देख सकते हो कि जो हमारा उड़ान भरी थी चंद्रयान ने, जो पहली उड़ान भरी थी, वो काफी रोमांचक थी। आपको उसको मिस नहीं करना चाहिए और ये हिस्टोरिकल मोमेंट है सभी के लिए, तो प्लीज उसे जरूर देखिएगा। अगर आपने मिस कर दी तो आप बैक जाके भी देख सकते हैं। तो मेजर स्पेसिफिकेशन ऑफ लैंडर की यहाँ पर बात हो रही है। इसका पावर 738 वॉट है और मिशन लाइफ है 1 लूनर डे, दैट इज 14 अर्थ डेज इसका लाइफ है। और मिशन लाइफ जो है रोवर का और लैंडर का बिल्कुल सेम है, यानी 14 अर्थ डेज। लूनर में वो 1 डे होता है, यानी चांद का 1 दिन और हमारा 14 डेज इनकी लाइफ है। और पावर भी, मास जो है लैंडर का बहुत ज़्यादा है और रोवर का 26 kg है। लैंडर का जो मास है वो है 1749.86 किलोग्राम और लैंडर का जो मास है वो 26 kg। लगातार इसकी स्पीड जो है वो बताई जा रही है आपको। हम अपडेट बिल्कुल करते रह रहे हैं, हर मिनट हमें देखना है इसको, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए, हम सभी के लिए, सभी भारतवर्षियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मोमेंट है। एक भी पल हमें इसको मिस नहीं करना है। सभी की नजरें आप देखो अभी आराम से बिल्कुल स्क्रीन पे बने हुई है, क्योंकि ये जो मोमेंट है कोई भी इसको मिस नहीं करना चाह रहा। और चंद्रयान पर लगातार हमारे सारे साइंटिस्ट की नजर। सेवन 720 सेकेंड्स हो गए हैं चंद्रयान को उड़े हुए। और ये सभी साइंटिस्ट हैं जो लगातार उसकी हर मोमेंट को यहाँ पर कैप्चर कर रहे हैं, हर चीज़ को यहाँ पर ध्यान रख रहे हैं, ये हमें भी बताते जा रहे हैं। 737 सेकेंड्स हो चुके हैं।
ये वीडियो हम अभी स्टार्ट ही रख रहे हैं ताकि आप हर मोमेंट को कैप्चर कर सकें और हम हर मोमेंट यहाँ पर देख सकें। हाँ, भारत माता की जय और आई लव माई इंडिया ये बिल्कुल बना रहना चाहिए हमारे इस चैट बॉक्स पे, ताकि हर भारतीय आज ये बिल्कुल अंदर से फील हो रहा है हमें कि कितना प्राउड है। जब चंद्रयान को एकदम उड़ते हुए देखा था, चंद्रयान को उड़ान भरते हुए देखा था, तो हमें भी बहुत अंदर से बहुत अच्छा फील हो रहा था। तो यहाँ पर जो लगातार साइंटिस्ट बैठे हैं, आप उनको, उनके मन को भी आप देख सकते हैं। चलिए, ये वीडियो हम आपके लिए ऐसे ही छोड़ रहे हैं ताकि आप इसके हर मोमेंट को देख सके, हर मोमेंट को फील कर सके और हर तरह से चंद्रयान की जो यात्रा है उसकी अपडेशन भी आपको मिलते रहे। ठीक है।
My team Chandrayaan 3, very happy to note that our Chandrayaan 3 has been injected into an intended orbit with very close orbital parameters. Congratulations and thanks to LVM3 team. And all our spacecraft health parameters are normal, including the power generations in both propulsion module and lander module. Our journey to moon has begun now for the most awaited soft landing. We'll be closely monitoring and controlling the spacecraft from its track Bangalore. Many critical events are lined up, starting from earthbound maneuvers, insertion into the lunar orbit, and separation of lander, and set of deboost maneuvers, and finally the power descent phase for a soft landing. I take this opportunity to thank
Chairman ISRO, Director URSC, and all the center directors for entrusting me this opportunity, who are behind, who have been the motivational and guidance force behind this mission. My special thanks to Chandrayaan-3 project executives, Associate Project Director Kalpana, Deputy Project Directors, Project Managers across the ISRO centers who have provided an excellent support in building the spacecraft. My special thanks to the expert committees for their constant guidance throughout the various stages of the project. I also thank the various work centers and industries who have contributed directly and indirectly to this mission. My special thanks to URSC council members, group directors, deputy directors across the ISRO centers, and looking forward for the soft landing with all your wishes and blessings from the God. Thank you. We have our Honorable Minister for Space, Minister of State for Space, Dr. Jitendra Singh ji, amongst us during this historic occasion of success of launching of LVM-3. So we would like to hear a few words from him. Over to you, sir. It is indeed a moment of glory for India and a moment of destiny for all of us over here at Sriharikota who are a part of the history in making. Thank you, Team ISRO, for making India proud. And thank you, Honorable PM Narendra Modi ji, for having made this possible by unlocking the gates of Sriharikota and enabling the India's space sector. You would recall, Honorable Prime Minister had very recently said, sky is not the limit. And living by his words, I think the Chandrayaan today has gone beyond the limits of sky to discover the unexplored horizons of the universe beyond. Ladies and gentlemen, this day today, the 14th of July 2023, is also a day of vindication. Vindication of the dream that Vikram Sarabhai saw 6 decades ago. He might have been short of resources, but never short of confidence. And when we see those pictures of a launcher vehicle being carried on the carriage of a bicycle, without any remorse, without any slightest embarrassment, that is because Vikram and his team had faith in themselves, faith in India's potential, faith in India's acumen. And today, here, we are vindicating and we are reiterating India's indigenous capabilities, living up to the ideal of Atmanirbhar Bharat. And before I conclude, ladies and gentlemen, as Mother India enters into the next 25 years of this Amrit Kal, she pledges to play a leading global role in the emerging world scenario of 21st century. Thank you and congratulations once again. Thank you, sir. We will also introduce the directors of the centers who have done all those great work of building the rocket, building the scientific instruments for Chandrayaan-3, the Chandrayaan spacecraft itself, and made all those critical systems, and also the agencies who are going to handle the rest of the mission part, the tracking and the ground stations, and all those teams are here. So I request the directors of those centers to join. First, Director of Vikram Sarabhai Space Center. Good afternoon, India. In last 1 year, this is the 10th mission, including the precise landing of the reusable launch vehicle. So with this mission, this is the 7th mission of LVM-3, the successful mission. With this, the success rate of LVM-3 is 100%. And this is the ideal vehicle for Gaganyaan. Some of the changes that we are incorporating in Gaganyaan, we have implemented here. And the
Mark III has crossed the reliability of 0.9 and inching forward. So I take this opportunity to salute the entire ISRO community, especially the VSC community and all launch vehicle centers, industry partners for making the stages, making the sub-assemblies and testing. In fact, this is the third launch of LVM3 in 1 year. You know, the realizing the stages, assembling, testing, and then launching 3 LVM3s in 1 year is a Herculean task. I salute the industry as well as all the ISRO centers for this. And I wish all the very best. We know that when the beginning is good, the ending has to be good. I wish all the very best to the Chandrayaan for its solitary journey through the vastness of space and for making a feather-like soft landing in the 4th week of August. Good luck. Thank you. Dr. Narayanan, Director LPSC. Good afternoon to all of you. It is a historical event for Indian space program and a proud moment for all the Indians across the globe on this momentous occasion of the successful launch of the Chandrayaan 3. 3-in-1 spacecraft in the required orbit with the highest level of precision by our heaviest launch vehicle LVM3. After the 2 launches of LVM3 vehicle this year, this vehicle is realized in the record shortest time. Today, once again, all the vehicle systems have performed, demonstrated the 7th successful launch. As you all know, the entire spacecraft community has put wholehearted effort during last 4 years, and we have realized a marvelous, great scientific satellite. For this mission, the entire vehicle performance is as expected, as predicted. In fact, the precision in which the satellite is launched shows the reliability of this vehicle. And we too have 4 liquid propulsion modules, 2 in the launch vehicle. The L110 stage, C25 stage, it has performed extremely well along with all other vehicle systems. We too have 2 more propulsion modules, one for taking the spacecraft to the moon, another one for soft landing. I think it is already well integrated, the system health is very good. Today's success is the culmination of the dedicated, smart and hard work of all the ISRO team members and the work culture of ISRO and the review process what we follow. I am sure all further mission operations will be a grand success and we'll have the successful soft landing. On this occasion, let me congratulate and compliment the members of ISRO team, our family members who have really sacrificed, the partners from industry and academia, and the various review fora. Thank you. Jai Hind. The Chandrayaan craft was built at the UR Rao Satellite Center, so I request the Director of URC to speak. Good afternoon, ladies and gentlemen. I take this opportunity to first thank my colleagues from the Launch Vehicle Center for providing a textbook-like launch for Chandrayaan 3 on its journey towards moon. Thank you very much. And as Director LPSC and Director VSSC mentioned, realizing this kind of launch vehicle, third launch vehicle within a year's time is indeed a Herculean task. And thank you very much for the effort that has been put by all the members of the launch vehicle community and the industry supporting them. Coming to Chandrayaan 3, Mohan was telling that it is a penance. In fact, it is a penance of the Chandrayaan 3 team for the last 4 years, which has come today as an outcome. It is sitting like a brain sitting inside the head of a human being on that mighty vehicle. On top of that, that satellite was sitting, and it was such a happy moment to see that satellite getting separated. And our work continues from now for the next 42 days till we reach the lunar orbit and touchdown softly on moon. So we'll speak the rest of the things after the soft landing on top of moon.
Till then, thank you very much for all the members of the satellite community and the industry for your support, which has been continuing over several years, and I am sure will continue in future also. Thank you very much. Space Application Center Ahmedabad plays very important role in our scientific instruments and building of the satellites. Over to Director SAC, Nilesh Desai. Thank you. Good afternoon, everybody. At the outset, let me compliment Team ISRO for this excellent work, and especially vehicle team as well as the project team. And as we begin this historic journey towards moon, well begun is half done, as it is said. So I'm sure that we'll succeed in our effort and endeavor to land on moon safe and in secured manner with a soft landing after 45 days. So I wish all the best to all the people who have contributed directly or indirectly, and especially to the project team, spacecraft team, as well as my team at Space Application Center, who has developed sensors and other hazard detection and avoidance system, which will help for a secured and safe landing on moon. So once again, I thank all who have contributed in this mission. Thank you. Director of this center, Satish Dhawan Space Center, is the chairman of the Launch Authorization Board and also realizing the solid motors of this rocket. So over to Director SDSC Shah Rajarajan. Honorable Minister of Science and Technology, Dr. Jitendra Singh, respected Chairman, our mentors and the dignitaries present here, and the entire ISRO family, a very successful launch and hearty congratulations to all the LVM-3, M4 and Chandrayaan-3 mission. So once again, the fat boy has done its job and put a very precisely our prestigious lunar mission Chandrayaan-3 in the transfer orbit. And I congratulate the SDSC SHAR team, because throughout this launch, we had many launch campaigns of C-55 and 56. Along with that, we are proud to have this. In spite of the weather conditions here, we have successfully launched LVM-3 in the prescribed launch window time between July 12th and 19th. And we had a very good, smooth campaign here, and all the hearty congratulations to the entire launch vehicle team, as well as for the last 2 months for hosting the Chandrayaan-3 team here and carrying out all the tests to make sure that Chandrayaan-3 is also ready for the mission. And I also thank our entire logistics team who handled this huge crowd throughout this campaign period, in particular last 2-3 days. And my sincere thanks to the various Indian industries who are now participating in various aspects of solid motor processing as well as the assembly activities of our launch vehicle to make it successful. And I wish a glorious success in the future to come. And I wish, as mentioned in the last week of August, to have a successful soft landing of Chandrayaan-3 lander on the moon surface and to make history. Once again, thank you. Jai Hind. I request all center directors to join on the podium. Please come, all of you. Can you lower this? Please come. Please come here. Come. Please come.
So you're saying that with your Galaxy LTE smartwatch, you can go anywhere without your phone? Anywhere. Like how far? This far? Try it. This far? This far? This far? Dude, can I have my Galaxy LTE smartwatch back? So there are like, say, for example, Uranus is a planet which is like having a pole tilt, which is directly almost perpendicular to the direction of sun. So it's something like a ball rolling. Because it's other planets are like 23, 24 degree tilt, but this is 90 degree tilt, etc. That's what. And another crazy thing is about the Venus, which is having a direction opposite rotation, so that the typical proverbial sun rising in the west and setting in the east will happen in that kind of planet. Instead of sending a person into the future, you can transmit information into the future. The time travel to future is not having any theoretical problem. It's only a technological problem. But Really? technology is not available right now to send an actual human being into future. I was looking forward to this podcast for an extremely long time. And trust me, if you like chatter about UFOs, aliens, science fiction oriented concepts like time travel, like the future of science, this conversation with ISRO scientist Jijit Nadumuri is going to be the conversation you've been looking forward to. Trust me when I say this. If you enjoy these slightly alternative conversations, but if you want to back it up with science, this is the episode for you. If you can't consume the entire podcast because this one was slightly long and heavy, we have a highlights channel on YouTube. It's called TRS Clips. If you want to increase your attention span, then meditate using my meditation app Level. It will help you begin your meditation journey, and then you'll be able to watch our episodes in their entirety. And finally, I'll say follow us on Spotify. We're a Spotify exclusive. Every episode's available on Spotify 48 hours before it's available anywhere else in the world. UFOs! Aliens! Kya alien hote hain, dosto? You'll get to know the truth in this particular episode. Enjoy yourselves. Jijit Nadumuri, sir, welcome to the Ranveer Show. How are you? Yeah, I'm fine. Thank you. You know, we've got so many demands to bring an ISRO scientist on the show. You're a very hot property on the internet. Why do you think that is? Why do you think the audience is so fascinated by ISRO scientists? Because primarily because ISRO is such a different organization. It's a government organization, but it has caught the imagination of all the youngsters and the entire youth of the country because of the way the launches are happening and the kind of achievements ISRO was having in the last 3-4 decades, and even recently so many kind of things which are like, not, I don't say science fiction, but something which every Indian will be feel proud of, going to the moon, going to the Mars. So it's like something like it has got an aura of itself, that ISRO has that kind of you can say fame, and also it can captivate the mind of the youth. Definitely that could be the reason. Okay. One thing I've understood about scientists is that most scientists actually began to fall in love with science through science fiction. Like, we all saw movies, we read books, which actually got us inclined towards the world of science. And then the ones who were very inclined towards it became scientists. So in the modern day, sir, as a scientist, what do you really do at ISRO? Like, I know it's a very raw question, but what does a scientist at ISRO do? Like, what are you conducting research on? And how is ISRO built specifically from a science